Hello everyone. Today our class is upon the forest and natural vegetation of India. This forest and natural vegetation of India is always important from the examination point of view, and you have to be well prepared regarding this component of Indian geography. And there are quite often the questions which are coming from this component of the Indian geography. So about the forest and natural vegetation of India, let me tell you a few things before I could proceed with the topic. The first important thing you have to remember is that the natural vegetation of any area is a function of the climate, of that region. It is the climate which determines the kind of forest, the kind of vegetation which a particular region will be having. So climate का ही ये function है. There are two factors. One factor is the temperature. One factor is the temperature. Another factor is the moisture availability. This temperature and moisture availability are in turn dependent upon the climate of of any region. So this temperature and the moisture availability, these are the chief elements. Which determine the character of the vegetation found in various parts of the world. जितना यहाँ पे ज्यादा टेम्परेचर होगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, उतनी ही वहां पे फॉरेस्ट एरिया, उतना ही वहां पे जो है नेचुरल वेजिटेशन ज्यादा होगा. आप देख सकते होंगे अगर यहाँ पे 0 डिग्री इक्वेटर है तो 0 डिग्री इक्वेटर के अराउंड जो है हमेशा टेम्परेचर ज्यादा होता है. तो दैट मीन्स वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो रेनफॉल भी ज्यादा होता है. दैट मीन्स मॉइस्चर अवेलेबिलिटी भी ज्यादा होता है. तो बिकॉज ऑफ दीज टू फैक्टर्स, द एरियाज विच और अराउंड द इक्वेटर, दिस इक्वेटर रीजन में जो भी एरियाज पड़ते हैं, तो यू विल नोटिस दैट द फॉरेस्ट एंड नेचुरल वेजिटेशन ऑफ दोज एरियाज इज वेरी रिच. It's very diverse. So because India also lies here, India also lies around those parts which are nearer to the equator. अब इंडिया की लोकेशन जो है that is from 7 डिग्री नॉर्थ. अब इक्वेटर के बिल्कुल पास में ही है. नो डाउट इक्वेटर जो है, इक्वेटर इंडिया के थ्रू पास नहीं होता है, बट इक्वेटर के बिल्कुल नॉर्थ में इंडिया लाइज देयर. देन यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. नो, बिकॉज इंडिया इज अ ट्रॉपिकल कंट्री which is nearer to the equator. Because of these factors, because of this temperature and the moisture availability, the forest and the natural vegetation of India is quite rich. It's quite diverse. So these factors you have to remember for at the beginning. इसके बाद में ही हम major forest types जो है उनको study करेंगे. Now so therefore India is a tropical country, and the temperature in most parts of this country is conducive to the plant growth. It is the temperature which determines the plant growth of India, which determines the forest growth of India. Therefore, the amount of precipitation is more important. Precipitation, which is in turn dependent upon the climate of any country, it is that precipitation which determines the control of the plant cover. किस तरह की vegetation होगी, किस तरह का forest होगा. तो आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी. If you are writing if you are writing the answer regarding to this topic, you have to remember that it is the climate of the region which determines the forest and the natural vegetation of India. जितना ज़्यादा climate hot होगा, उतना दैट मीन्स जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना मॉइस्चर भी ज्यादा होगा. दैट मॉइस्चर अवेलेबिलिटी, दैट टेम्परेचर, these are the factors, these are the chief elements which determine the forest and the natural vegetation of India. चलिए अब हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं. Our topic, as you know, this is the forest and the natural vegetation of India. Let me tell you that according to the Indian State of Forest Report 2019, the forest area of India is 24.39% of the total area. And these forests are either very dense forests, moderately dense forests, or the open forests. Okay. So if I'm writing these points here, very dense forest means the tree cover. जो tree density है वहाँ पे, जो tree cover है, वो ट्री कवर बहुत ही ज्यादा डेंस है. तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक ट्री है, यहाँ पे दूसरा, सात ट्री लगे हुए हैं ऐसे ऐसे. सो डेंसिटी जो है, डेंसिटी बहुत ज्यादा है. सो ऑन द बेसिस ऑफ द ट्री अवेलेबिलिटी और द ट्री कवर ऑफ एनी काइंड ऑफ रीजन, यू विल स्टेट दैट if the tree cover is very dense, that will be the very dense forest.
if the tree cover is sparse, दूर दूर वहां पे trees है, that will be the moderately dense forest. And if the tree cover is very sparse, very far away, if the trees are very far away from one another, that will be the open forest. And this is the Indian State of Forest Report 2019, which states that the total area of India, from that area, this is 24.39%, which is covered by these forests. Those forests can be either very dense forests, moderately dense forests, or the open forests. State with the highest forest cover is Madhya Pradesh, whereas the least forest cover is of the state of Punjab. सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, सबसे कम जो है वो है पंजाब में. ये 2019 की बात है, एंड इट मे चेंज व्हेन यू विल मूव ओवर द इयर्स, क्योंकि दिस इज ऑफन, जैसे कोई स्टेट जो है अगर वो कोई कंपेन चलाती है एफॉरेस्टेशन पे, तो मे बी नेक्स्ट ईयर आपको उसको देखेंगे कि वहां पे जो है ज्यादा फॉरेस्ट कवर आप देख सकते हैं. जैसे यहाँ पे पंजाब है, पंजाब से पहले द स्टेट विद द लीस्ट कवर इट वाज हरियाणा, लेकिन अब पंजाब है. सो इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, एज आई टोल्ड यू, ट्रॉपिकल कंट्री का मतलब ये होता है अगर ये 0 डिग्री इक्वेटर है तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, द लोकेशन ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. देन यहाँ पे जो है, यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है 60 डिग्री के आसपास पड़ता है. तो आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है, इंडिया का कुछ पोर्शन इट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. कुछ पोर्शन तो इन एरियाज के बीच में है, और कुछ पोर्शन जो है दैट लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. दैट्स व्हाई वी कॉल इंडिया एज द ट्रॉपिकल एज वेल एज अ सब ट्रॉपिकल कंट्री. सो इंडिया इज अ ट्रॉपिकल country. The temperature in most parts of the country is conducive to the plant growth, as I told you. So based upon the climatic conditions, forests are divided into 5 main categories. There are 5 main categories of forests which you can see in India. So these 5 main categories are, they are the tropical evergreen forests or the semi-evergreen forests. Tropical evergreen and semi-evergreen forests are the important forests of India. Second category, second type is the tropical deciduous forest. Third is the tropical thorn forest. Fourth is the tropical montane forest, and fifth is the littoral and swamp forest. We have to study in today's topic, we have to study these forest types one by one in detail. Then only we can be able to understand this topic in a holistic manner, in a comprehensive manner. So let's move on. The first type of forest vegetation of India is known as the tropical evergreen and the semi-evergreen forest. This tropical evergreen and semi-evergreen forest, as you can see in this pic, they can be seen in areas which have more than 200 centimeters of rainfall with a very short dry season. जहां पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी, तो वहीं पे आप इन ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को देख सकते हो. These forests, tropical evergreen forests, they can be seen, they are found in the western slope of the western Ghats. तो यहाँ पे आप इनको देख सकते हैं. Hills of the northeast region, यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं. And the Andaman and Nicobar Islands, तो यहाँ पे भी आप इन एरियाज को देख सकते हैं. इसके अलावा आप जम्मू कश्मीर के कुछ पोर्शंस भी इन एरियाज, दिस ट्रॉपिकल एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट जो है, you can see those areas in the parts of Jammu and Kashmir as well. Now the trees, they reach to the very great heights, that's up to the 60 meters or even above. You can see the trees which could reach up to the height of 60 meters or above. There is no definite time for trees to shed their leaves. They appear green all around the year. Okay, ऐसे ही ये पूरे साल 12 के 12 महीने जो है, they appear like this, they appear green, they appear lush green. जब उनकी तरफ आप देखेंगे, they appear very green. Some of the commercially important trees of this forest. Now this is important from the examination point of view. The trees which you can find, which can be founded in the tropical evergreen and semi-evergreen forests are ebony, mahogany, rosewood, rubber and cinchona along with the bamboo. That means अब ये ट्रीज जो है उन्हीं एरियाज में आप पा सकते हो जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो सकती है.
So these trees can be found in those areas, and the animals which can be found in those forests, they're elephants, monkey, lemur, and the deer. So this is some information, some important brief information regarding the tropical evergreen and the semi-evergreen forests. Now there are some important features of these forests as well. So यहाँ तक आपने ये समझा होगा, that means अगर यहाँ पे 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल होती है इस एरिया में, तो आपने ये समझा होगा कि that means the moisture availability will be very much moisture due to the adequate moisture availability all around the year. एंड जो मॉइस्चर अवेलेबिलिटी के साथ साथ वहां पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है, हाई टेम्परेचर होता है. द वेजिटेशन जो है यहाँ पे इट रिमेन्स वेरी एक्टिव ऑल अराउंड द ईयर. वेजिटेशन रिमेन्स वेरी एक्टिव एंड देयर इज नो पर्टिकुलर लीफ शेडिंग सीजन. लीफ शेडिंग सीजन जो है, देयर इज नो लीफ शेडिंग सीजन, देयर इज नो लीफ शेडिंग सीजन. जैसे आप अपने एरिया में देखते होंगे कि लीव्स वगैरह जो भी कोई सीजन होता है, द लीव्स फ्रॉम द प्लांट दे कम डाउन, वो शेड होते हैं. ऐसा जो है यहाँ पे इस ट्रॉपिकल एवरग्रीन और सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऐसा कुछ नहीं होता है. तो यहाँ पे जो है यू विल ऑलवेज रियलाइज दैट दिस इज द ग्रीन एरिया, एंड जो यहाँ पे लीव्स होते हैं, दे डोंट हैव एनी पर्टिकुलर लीफ शेडिंग सीजन. The forest therefore they look always green. Okay, they look always green. And along with that feature, there is one more feature which is associated with these forests. That feature is known as epiphytes. Now what is epiphytes? Epiphytes, the trees in these forests are very tall, and they support a lot of epiphytes. These epiphytes, they are the plants. ये छोटे छोटे plants होते हैं. These small plants, these epiphytes, they are the small plants. These epiphytes are the very small plants that need support of the trees for growth, as they have weaker stems. छोटे छोटे जब आप देखोगे, जब आप किसी फॉरेस्ट में जाते होंगे या कभी कहीं आपने फॉरेस्ट देखा होगा, आपने रियलाइज किया होगा जो है वहां पे बिल्कुल उन जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं उनके नीचे जो है बहुत ज्यादा वेजिटेशन होती है. दैट वेजिटेशन इज नोन एज द एपिफाइट वेजिटेशन. और वहां पे ऐसे प्लांट्स, वो जो प्लांट होते हैं, वो छोटे छोटे प्लांट, दे ऑलवेज नीड द सपोर्ट ऑफ ट्रीज फॉर द ग्रोथ, एज उनके पास जो है एज दे हैव द वीकर स्टेम्स. ओके, तो यहाँ पे जो है उनको हम बोलते हैं एपिफाइट. सो दिस एपिफाइट इज एन इंपॉर्टेंट फीचर एसोसिएटेड विद द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड द सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट. एंड जो सनलाइट की बात करें, अगर इस सन है तो सनलाइट की जो ये सन रेज होती है, डायरेक्ट सनलाइट जो है मोस्ट ऑफ द एरियाज इन द ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो सनलाइट जो है वहां पे नीचे तक, जमीन तक, जो ग्राउंड तक जो है वो वहां तक नहीं पहुंचती है. Because it's always covered by canopy kind of thing. It is always covered by the tree canopy. एक ट्रीज ने वहां पे जो है एक छाता जैसा बनाया होता है, बिल्कुल कंप्लीट ट्री कवर होता है ऊपर से, तो जिसकी वजह से जो है सनलाइट नीचे जमीन तक नहीं पहुंच पा रही है. Now the second important topic of forest is what is known as the tropical deciduous forest. These tropical deciduous forest जो है, ये इंडिया का सबसे ज्यादा एरिया अगर कोई तरह का फॉरेस्ट कवर करता है, वो है ट्रॉपिकल deciduous forest. These forests cover the larger part of the country. अगर हम फॉरेस्ट की बात करते हैं, सबसे ज्यादा एरिया जो कवर करते हैं फॉरेस्ट टाइप, वो है ट्रॉपिकल deciduous forest. These tropical deciduous forests, they are the most widespread forests of India, as I told you, and they are popularly known as the monsoon forests as well. Second point, tropical deciduous forests are found in those regions which have rainfall between 70 and 200 centimeters. Rainfall यहाँ पे 70 up to 200 centimeters की होती है. Tropical deciduous forests are further categorized into two categories. पहला टाइप जो है moist deciduous forest, second जो है dry deciduous forest. Moist deciduous forest and the dry deciduous forest are the two types of the tropical deciduous forest. अब ये जो है, जो ऊपर वाली पीक है यहाँ पे, इसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल मॉइस्ट deciduous forest. तो यहाँ पे थोड़ा आप मॉइस्चर कंटेंट देख सकते हो, यहाँ पे थोड़ा ग्रीन सा लग रहा है थोड़ा बहुत, तो दैट्स व्हाई दिस कैन बी नोन एज द मॉइस्ट deciduous forest. एंड द पिक्चर बिलो हियर, you can term it as a dry deciduous forest. This vegetation is like this, as you can see in this picture here. The moist, अब हम moist deciduous की forest करते हैं पहले. The moist deciduous forests, they are found in the regions which record rainfall between 100 and 200 centimeters. The moist deciduous forests are found along the foothills of the Himalayas, यहाँ पे.
along the foothills of the Himalayas, eastern slopes of the Western Ghats, यहाँ पे ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स, तो यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं, एंड उड़ीसा के पार्ट्स में भी जो है आप इन फॉरेस्ट को देख सकते हो. दिस मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट की बात कर रहा हूं मैं. दीज फॉरेस्ट, दीज ट्रॉपिकल, जो ये ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, you have to remember one thing, that these forests are commercially very important. These forests are commercially very important because they provide the good quality of timber to us. The good quality of timber which you receive, that timber is produced by the tropical deciduous forests. Among those forest products, among those trees, it is the teak which is the most dominant species of this forest. teak के बाद जो है bamboos, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी. These are the other commercially important species which you will find in the tropical deciduous forest. Now, after the moist deciduous forests, the dry deciduous forests are found in the regions that receive precipitation between 70 and 100 centimeters. As the dry seasons begin, the trees of deciduous forests shed their leaves completely. That means dry deciduous forest जो है, there is nothing like the evergreen kind of vegetation. There is nothing like the epiphytes जो है वो भी यहाँ पे नहीं मिलते हैं, जो हमने अभी पीछे वाले टॉपिक में देखा था. epiphytes, these tropical, these tropical dry deciduous forests are devoid of the green evergreen cover all over the year, and they are also devoid of the epiphytes. Among the trees which you can find in this dry deciduous kind of vegetation, जो इस dry deciduous forest में आप देख सकते हैं, tendu, palas, amaltas, bel, kher, axlewood, etc. are the major trees of the dry deciduous. Now dry deciduous की vegetation अलग है, इसके trees अलग है, और जो moist deciduous है, उनकी vegetation, उनके trees वो they are the separate. The third category of forests in India you can find is the tropical thorn forest. This kind of category is the tropical thorn forest. These tropical thorn forests are found in the areas which receive very less rainfall, which receive rainfall less than 50 centimeters. These tropical thorn forests are found in the areas of southwest Punjab, Haryana, Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Uttar Pradesh. You will realize that in these regions the moisture content is always less. This is the dry area, this is the comparatively desert area, तो badlands वगैरह इन areas में पाई जाती है. So that's why in those areas you can find these tropical thorn forests. Among the various kind of vegetation trees you can find here is the babool, bear, okay, babool, bear, wild date palm, khair, neem, khejri, palas, etc. They are the important species of tropical thorn forests. The areas in the Rajasthan, जो अरावलीज के आसपास के एरियाज है, वहां पे ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं. और जो गुजरात का कच्छ एरिया है, तो ये एरिया जो है, इस एरिया में आप इस ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट को जो है वहां पे देख सकते हो. दिस एरिया is the area where you can find this tropical thorn forest. The fourth important category of forest are the mountain forests These mountain forests, they in India are normally found in two areas. One area जो है, that is the northern mountain forest, जो Himalayas के around areas है. Okay. The second area is of these mountain forests, it lie in the Western Ghats area. जो southern mountain forest है, ये आप Western Ghats में भी यहाँ पे इस एरिया को देख सकते हो. These mountain forests, the vegetation of these forests change with the elevation. ये टॉप वाली एलिवेशन है. टॉप पे आप इस तरह की वेजिटेशन देख सकते हैं. अब नीचे जो फुट हिल्स है या नीचे जो और एरियाज है, राइट फ्रॉम द सी लेवल अप टू द अबोव, अप टू द टॉप लेवल, आप किस तरह की वेजिटेशन देख सकते हो. दैट डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन. दिस वेजिटेशन ऑफ दिस फॉरेस्ट, दिस चेंज विद द एलिवेशन. जैसे आप हाइट ऊपर जाओगे, सी लेवल से ऊपर आप जाओगे, आप चढ़ते जाओगे, तो वेजिटेशन भी चेंज होती जाएगी. फॉर इंस्टेंस, द फुट हिल्स
द फुटहिल जोन्स ऑफ द शिवालिक्स, जो हिमालयस के फुटहिल्स है उनको हम शिवालिक्स बोलते हैं। दे आर कवर्ड बाय द ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट, वहां पे आप इस तरह की वेजिटेशन देख सकते हैं, साल एंड बम्बू वेजिटेशन देख सकते हैं, इस तरह के फॉरेस्ट देख सकते हैं। Tropical moist deciduous forest you can see in that area, and the sal and bamboo, you can see these type of trees in these areas. That means this is one category of vegetation you can find in the mountain forest, जो सबसे नीचे सबसे below आपको मिल सकती हैं। Then between 1000 and 2000 meters above the sea level you can find the wet hill forests of oak and chestnut. So these are also two important categories of trees you can find at the higher elevations in these kinds of forests, mountain forests, chestnut and oak. In fact, some pine forests are also there. Then after this zone, after that means about 2000 meters, about 2000 meters जब आप जाओगे from the sea level 2000 meters के above क्या मिलेगा आपको, that zone is followed by the coniferous forests. Coniferous forests, these coniferous forests you can see, these coniferous forests in the areas which lie between 1600 and 3300 meters from the sea level. The trees you can find pine, deodar, silver fir, spruce. So these are the forest vegetation type you can see in the mountain forest. Above the coniferous forests are the alpine forests of silver fir and birch. Alpine forests of silver and fir and birch you can see in those areas which are above 3600 meters. इसके above आप वो ऐसी vegetation देख सकते हैं. At the topmost altitude, however, at the higher altitude, the tundra, this is the tundra, right here, this is the tundra vegetation. The tundra vegetation is found and major species are mosses and lichens. These lichen kind of जो आप यहाँ पे छोटी छोटी vegetation देखते हो, they are known as the lichens and the mosses. Okay, lichens and the mosses, you can see that kind of vegetation at the topmost elevation, जहाँ पे बिल्कुल temperature भी कम होता है और जहाँ पे जो है sunlight जो है, जहाँ पे temperature कम होता है और precipitation भी कम होती है. Thus, the zonation of the vegetation in the mountainous regions, it's vertical, and all types of vegetation from tropical to tundra type are found in these regions. At higher altitude, the southern mountain forests largely belong to the temperate type, which are locally known as sholas. Sholas को हम इन forest को बोलते हैं South India में. Sholas in the Nilgiris, Annamalai and Palani hills. That means Tamil Nadu, Kerala, Karnataka area में हम उन forest को, इन mountain forest को बोलते हैं shola forest. Shola forest. And some of the trees which are very important, which have the economic significance, they include magnolia, laurel, cinchona and wattle. These are the trees you can find in the mountain forest in South India as well as in the northern India. The fifth and the last category of forest ecosystem of India, forest type of India, is the littoral and the swamp forests, yeah, tidal forests. How can you define those forests? Littoral refers to the shallow water zone of the sea, mainly the continental shelf. जो सी है, अगर ये सी है यहाँ पे, तो सी के बिल्कुल पास में ही अगर आप कोई वेजिटेशन देखते हैं बहुत ज्यादा, दैट वेजिटेशन, दैट फॉरेस्ट इकोसिस्टम कैन बी नोन एज द लिटोरल और द स्वैम्प फॉरेस्ट सिस्टम. और द स्वैम्प फॉरेस्ट, इनको हम टाइडल फॉरेस्ट भी कहते हैं, कभी कभी हम इनको मैंग्रोव्स भी बोलते हैं, कभी कभी हम उनको मैंग्रोव फॉरेस्ट भी बोलते हैं. नाउ the littoral, as I told you, littoral refers to the shallow water zone of the sea, mainly the continental shelf. India is very rich in littoral and swamp forests. For example, in India, the mangrove forests cover, it spread to over 6740 square kilometers, which is 7% of the world's mangrove forests. Most trees in these forests are those that can grow in marshy conditions, wet conditions. One example of that tree is the Sundari tree. Sundari tree you can find in the Sundarbans. सुंदरबंस, यहाँ पे वेस्ट बंगाल में ये सुंदरबंस पड़ते हैं, तो यहाँ पे आप सुंदरी ट्री देख सकते हैं. इट्स एन एग्जांपल. मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ मिलते हैं हमें? मैंग्रोव फॉरेस्ट, we sometimes call these forests as the mangrove forests as well. They can be found in the Andaman and Nicobar Island areas. They can be found in the Sundarbans, and they can be found all across the coastal regions, right from Tamil Nadu में भी आप इसको देख सकते हैं, महाराष्ट्र में भी आप इसको देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स के कोस्टल एरियाज में भी जो है आप इन एरियाज को देख सकते हैं. These littoral swamp forests can be found all along the coastal areas of the country. So this was the main forest vegetation of India.
And the last one was the littoral and the swamp forest. You have to remember that this littoral and swamp forest, you can find these forests mostly in the delta areas, in the estuaries. For example, the estuaries of the large rivers like Ganga and Mahanadi, जो Bay of Bengal में flow करती है, they support this type of vegetation, littoral type of vegetation. Okay, so they, as I told you, these littoral and swamp forests, they grow in the very marshy conditions. So it was all about the various kinds of forests which are available in India. And furthermore, there is now the need for the conservation of these forests. This conservation is very important. No doubt we have some 24% of the forest area which is available with us, but और जो हमारी जो policy है, the policy with the international research that suggests that at least 33% of the total area of India should be under the forests. That then only we can say that we have the stable forest cover, we have the stable vegetative cover. But no doubt, since 1947 when we got the freedom, we have been able to reverse. There was no doubt that there was the deforestation, there was the deforestation kind of things, there was the forest degradation which was going on, but from quite few years, कुछ एक दो एक दो डिकेड से 10-20 साल से हम कोशिश कर रहे हैं कि दैट वी आर फाइनली बीइंग एबल टू रिवर्स दिस ट्रेंड. तो हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है दैट हैज इंक्रीज्ड बाय 1% कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर्स. 1% का हमारे यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है. दिस स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट हमें ये भी कहता है दैट वी नो डाउट नीड टू डू lot as far as the deforestation is concerned. For example, in case of northeast, there is a practice called the shifting cultivation. This zoom cultivation or the shifting cultivation, इसको हम बोलते हैं slash and burn. ये क्या करते हैं, ये पहले अपने ये फॉरेस्ट को बर्न करते हैं, तो वहां पे कल्टीवेट करते हैं फिर क्रॉप्स वगैरह. सो दिस हैज बिकम द प्रॉब्लम इन नॉर्थ ईस्ट. वहां पे दैट फैक्टर हैज लेड टू द फॉरेस्ट डेग्रेडेशन टुवर्ड्स दैट एरिया. और इसको हमने कंट्रोल करने की के बारे में जो है स्टेप्स हमें फॉरवर्ड करने होंगे. There no doubt have been the steps which have been taken by the union government as well as the state governments in order to conserve these forests. For example, during the sixth 5-year plan, okay, during the sixth 5-year plan, हमने क्या किया था? सिक्स्थ 5-year plan पे हमने जो है एक concept यहाँ पे launch किया था. That concept is known as the social forestry. So the social forestry was launched during the sixth 5-year plan. That was very important step towards the conservation of forests, because that scheme, this social forestry scheme, that aimed at the creation of the cultivated forests to meet the community requirements of the timber, firewood, fodder. मतलब that was a kind of forestry. Social forestry was a forestry जिसको हम कहते थे forestry of the people, by the people, for the people. So that we could save the forest. क्योंकि जो वहाँ पे जो community, जो लोग वहाँ पे रहते थे, forest के आसपास रहते थे, उनको हमने rights दिए थे. वो थोड़ा थोड़ा जो है अपनी requirements, चाहे वो timber की हो, firewood की हो या fodder की हो, तो वो वहाँ पे वो उसको acquire कर सकते थे, but in a sustainable way, in a sustainable manner. आप ऐसे उसको लूट नहीं सकते हो, इन सस्टेनेबल मैनर. ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार जो है उसको खत्म करोगे, ऐसा नहीं करना है. सस्टेनेबल तरीके से आपको फॉरेस्ट रिसोर्सेज को वहां पे यूज करना है. दैट वाज द एम, दैट वाज द मेन फोकस ऑफ दिस सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम एज वाज लॉन्च्ड ड्यूरिंग द सिक्स्थ 5-year plan. द गवर्नमेंट ऑल्सो एनेक्टेड, हमने एक इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन एनेक्ट की थी 1980 में हमने एक लेजिस्लेशन एनेक्ट की थी. दैट लेजिस्लेशन इज नोन एज द इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. ओके, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980. दिस इज द लैंडमार्क लेजिस्लेशन ऑफ इंडिया. दिस फॉरेस्ट Conservation Act of 1980. This is the landmark legislation of India which was enacted in 1980, and under this legislation we issued the guidelines to minimize the diversion of forest land to other uses. तो वहाँ पे बिल्कुल हमने restrictions लगा दी, so that the forest resources are not exploited beyond recovery. तो ऐसा जो है हमने एक स्टेप फॉरवर्ड किया था यहाँ पे बाय एनेक्टिंग द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980.
And furthermore, in order to protect the forest, the role of Indian Council of Forestry, जो forest research institute है हमारा, Indian Council of Forestry Research and Education, that is the apex body at देहरादून. देहरादून में हमारा जो फॉरेस्ट रिसर्च वगैरह होता है, तो दिस बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च एंड एजुकेशन एट देहरादून, इट्स ऑल्सो द बॉडी विच इज एंगेज्ड इन द फॉरेस्ट रिसर्च, विच इज एंगेज इन द फॉरेस्ट रिसर्च. तो यहाँ पे इसके रोल को भी हम साइडलाइन नहीं कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट आर कंसर्न. तो फिर बहुत सारे हमारे और सेंटर्स है, जैसे फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून के साथ साथ हमें यहाँ पे एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर में है, या रेन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है. बहुत सारे हमारे और इंस्टीट्यूट्स है, या इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट जेनेटिक्स एंड ट्री ब्रीडिंग. तो ऐसे भी बहुत सारे फॉरेस्ट जो है फॉरेस्ट के रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस है. सो वी आर नो डाउट aiming at the conservation of forest. We are no doubt trying to stop this practice of forest exploitation, but still we need to do a lot in order to make this dream come true. And our dream is to to increase the forest cover from 24% up to 33%. जब ये हमारा 33% तक पहुंच जाएगा, तभी हम चैन की सांस ले सकते हैं. तब तक हमारे स्टेप जो है, हमारे एफर्ट जो है, दैट मस्ट कंटिन्यू इन ऑर्डर टू कंजर्व द फॉरेस्ट, इन इंडिया. सो thanks to you all for watching this video, and I'm coming with the other lectures as well. So I hope you enjoyed that. Please comment if anything is worth that. अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, कोई how I can improvise my class lectures, so please specify so that I could do more for you guys. Thank you.